वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं व्हाट दे डोंट टेल यू अबाउट एनवीडिया ओमनीवर्स ग्राफीन 3D प्रिंटिंग। तो जीजो, फेसबुक के बाद एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड बनाने वाली कंपनी ने अपना खुद का ओमनीवर्स लॉन्च करने का फैसला किया है। अब ओमनीवर्स क्या है? ओमनी जो लफ्ज है ये बेसिकली इस्तेमाल होता है खुदा के लिए, और वर्स जो लिया गया है ये यूनिवर्स से लिया गया है। लफ्ज ओमनी का मतलब हरगिज खुदा नहीं है, इसका मतलब होता है ऑल, यानी कि सब कुछ। इसीलिए थियोलॉजी में इस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है खुदा की जात के लिए कि वो ओमनी प्रेजेंट है, यानी कि वो हर जगह मौजूद है, ऑल नोइंग है। ये सारी चीजें इस्तेमाल करने के लिए ओमनी वर्ड जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप नोट करें कि यहां पर जो चीज खुदा की जात के साथ इस्तेमाल होने वाला वर्ड है उसको जानबूझकर यहां पर यूज किया जा रहा है ओमनीवर्स के तौर पर। अब ओमनीवर्स में क्या होगा या क्या होता है ये? तो जी इसका मकसद है इंसानों को और कंप्यूटर्स को ओमनीवर्स के साथ या इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना। अब ओमनीवर्स कहना ये एनवीडिया का ये है कि ये सिर्फ कोई एक नहीं होगी दुनिया, ये दुनियाएं होंगी या यूनिवर्सेस होंगे और डिफरेंट ओमनीवर्सेस होंगे, उन सब के साथ इंसान को कनेक्ट करेगा। ये ओमनीवर्स के अंदर इन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाया या एक ऐसा वे बनाया है जिसको इन्होंने यूएसडी का नाम दिया है, यूनिवर्सल सीन डिस्क्रिप्शन उसका नाम है। वो चीज जो इन्होंने बनाई, इनका कहना है कि जैसे कोई वेबसाइट होती है उसके अंदर लैंग्वेज यूज होती है HTML, तो इसी तरह ये लैंग्वेज है ओमनीवर्स की जिसको यूएसडी का नाम दिया गया है। अब ओमनीवर्स में बेसिकली पूरी दुनिया से कोलैबोरेशन की जा रही है। जो भी मॉडलिंग करते हैं, 3D मॉडलिंग वगैरह करते हैं, मॉडलिंग वो नहीं जो इंसान करते हैं, 3D मॉडलिंग की मैं बात कर रहा हूं, जो कि ये मॉडल्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट चीजें जो हमें नजर आती हैं गेम्स के अंदर, इनको मॉडल्स बोला जाता है। तो बेसिकली वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो हमारे फिजिकल वर्ल्ड का रेप्लिका बनाने की कोशिश की जा रही है और इतना फोटो रियलिस्टिक उसको बनाने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी अगर उस दुनिया में जाता है ओमनीवर्स में तो उसको ये महसूस ही ना हो कि वो रियल वर्ल्ड के अंदर नहीं है। अब इस टेक्नोलॉजी को बनाने का मकसद क्या है जी? इस टेक्नोलॉजी को बनाने का मकसद ये है कि बिजनेसेस जितने भी दुनिया के अंदर शॉप्स हैं या जितने भी छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं उन सबको फोर्स किया जाए कि वो मेटावर्स के अंदर या उसको ओमनीवर्स आप नाम दे दें, इसके अंदर अपनी जो शॉप है उसको लॉन्च करें। जैसे आज मजबूरी बन चुकी है, लॉकडाउन के बाद आपको पता है सारे बिजनेसेस ऑनलाइन हुए और इन सब की मजबूरी थी कि अपनी अपनी वेबसाइट बनाई जाए और होम डिलीवरी करना शुरू की जाए। तो वही चीज आगे फ्यूचर में चलकर ये करने वाले हैं कि जी लोगों को मजबूर किया जाएगा, बिजनेसेस को मजबूर किया जाएगा कि वो जैसे अपनी वेबसाइट बनाने लगे थे वैसे ही अब ओमनीवर्स के अंदर, मेटावर्स के अंदर अपनी शॉप्स या अपनी ऐसी चीजें ऑनलाइन करें। तो मल्टीपल ओमनीवर्सेस हैं जी, एक ओमनीवर्स नहीं होगा, बहुत सारे ओमनीवर्सेस होंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे एक मेटावर्स नहीं होगा, डिफरेंट मेटावर्स होंगे। जैसे डिज्नी ने अभी ऐलान किया है कि वो अपने फैंस के लिए अपना अलग से मेटावर्स बनाएंगे, इसी तरह फेसबुक अपना मेटावर्स बना रहा है, एप्पल अपना मेटावर्स बना रहा है, रोब्लॉक्स जो है वो अपना मेटावर्स बना रहा है, इसी तरह और गेमिंग कंपनीज हैं जो कि अपने अपने मेटावर्स बना रहे हैं। इस बात को सही से समझने के लिए हमें ये वीडियो क्लिप देखना चाहिए। तो चलिए पहले ये वीडियो क्लिप देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। 6ML models will predict the climate. Let's talk about Omniverse. The internet changed everything is surely an understatement. We are always connected now. The internet is essentially a digital overlay on the world. The overlay is largely 2D information: text, voice, images, video. But that's about to change. We now have the technology to create new 3D virtual worlds or model our physical world. These virtual worlds will obey the laws of physics, or not. There can be AI or friends with you. We will jump from one world to another, like we do on the web with hypertext. This new world will be much larger than the physical world. We will buy and own 3D things, like we buy 2D songs and books today. We will buy, own, sell homes, furniture, cars, luxury goods, and art in this world. Creators will make more things in virtual worlds than they do in the physical world. We built Omniverse for builders of these virtual worlds. Some worlds will be built for gathering and games, but a great many will be built by scientists, creators, and companies. Virtual worlds will crop up like websites today. Omniverse is very different than a game engine. Omniverse is designed to be data center scale, and hopefully someday planetary scale. The portal of Omniverse is USD, Universal Scene Description, essentially a digital wormhole that connects people and computers to Omniverse.
and for one Omniverse world to connect to another. USD is to Omniverse what HTML is to websites. Omniverse is futuristic. Omniverse can connect design worlds. Things created in the Adobe world can be connected to those in the Autodesk world through Omniverse, enabling designers to collaborate in a shared space. Changes by a designer in one world are updated for all connected designers, essentially like a cloud shared document for 3D design. Omniverse will revolutionize how the 40 million 3D designers in the world collaborate. Companies can build virtual factories and operate them with virtual robots in Omniverse. The virtual factories and robots are the digital twins of their physical replica. The physical version is the replica of the digital, since they're produced from the digital original. Omniverse digital twins are where we will design, train, and continuously monitor robotics factories and buildings, warehouses, and cars of the future. There are 15 million 5G microcells and towers planned for global deployment in the next 5 years. Ericsson is using NVIDIA Omniverse to build digital twin environments to help determine how to place and configure each of their sites for the best coverage and network performance. In Omniverse, Ericsson builds city-scale models that are physically accurate down to the materials of the buildings, vegetation, and foliage. Then, wireless network components are added, including the precise location, height, and antenna pattern of each transmitter. Ericsson built a custom Omniverse extension, enabling them to integrate radio propagation data and leverage Omniverse's RTX accelerated ray tracing to quickly visualize and calculate the quality of the signal at every point in the city. Because Omniverse materials are physically accurate, the intensity of reflections are precisely determined. Antenna beamforming and signal paths can be accurately simulated and visualized. In the simulations, the lobes signify transmitter antenna beamforming and the straight lines are signal paths. The colors of the signal paths denote strength in decibels and data throughput, from blue is the weakest to red is the strongest. Visualization is a critical capability for Ericsson. With Omniverse VR, network engineers can virtually explore any part of the model, teleporting to any location, anywhere in the world, at 1-to-1 scale. As they tune the network for optimal performance or identify path disruptions, they can literally see the effects of their adjustments in real time, things which aren't visible in real life. In Omniverse, Ericsson can perform true-to-reality remote simulation of entire 5G networks, enabling them to design more efficient and reliable networks, conduct remote field trials, and speed up deployments. जी, तो आपने ये क्लिप देखा जिसमें ये शख्स बता रहा था कि जितनी भी डिजिटल फैक्ट्रीज हैं वो बनाई जाएंगी ओमनीवर्स के अंदर, वो बेसिकली फिजिकल फैक्ट्रीज का रेप्लिका होंगी, या जो कुछ भी डिजिटल वर्ल्ड में क्रिएट किया जाएगा उसको फिजिकल वर्ल्ड के अंदर लेके आया जाएगा। और ये सब कुछ कैसे तब्दील किया जाएगा, किस चीज की मदद से तब्दील किया जाएगा, तो वो है जी जनाब ग्राफीन 3D प्रिंटिंग के जरिए। 3D प्रिंटिंग का आपको पता होगा कि इसके जरिए लोग गन्स बना लेते हैं, इसके जरिए लोग टूल्स बना लेते हैं स्पेस के अंदर, क्योंकि टूल्स वगैरह उधर लेके जाया नहीं जा सकते इतने भारी चीजें, तो वहां पर ही अगर किसी टूल की जरूरत होती है तो 3D प्रिंटिंग करके उस टूल को इस्तेमाल किया जाता है। तो आप पहले ये क्लिप देखें तो फिर बात करते हैं। Graphene is potentially a revolutionary material. It's a atom-thick layer of carbon atoms which is arranged in sheets. Now, one of the problems or potential problems with graphene is that even though you might end up using it in a screen on a computer or purifying water with it, there are questions over how industrially you might actually deliver these materials into devices that would be usable. One of the biggest challenges related to the use of graphene-based dispersion and other two-dimensional based dispersion is related with the quality of the material. So the community believes that the quality is not too high, and therefore this type of material is not suitable for electronics. The idea is to use millions and millions of tiny graphene flakes which are dispersed in a liquid, so in a solvent, and in our case is water. And the idea is to have different inks, and because these inks have different properties, you can actually use them to fabricate a device. A device is
usually a layered structure, so it's composed by many layers, one on top of the other, and every layer has different properties. So we wanted to build a device by printing the material layer by layer, one on top of each other, which at the end will give you a functional device, which can be a sensor, it can be a transistor, or any other type of device, depending on the sequence of colors that you decided to print. So there's a lot of chemistry involved here, because we have to understand how you dissolve these sheets of carbon and then how you print them out properly without the printer clogging or the thing degrading after a while because it didn't print onto the surface properly. The inks were already available, but the traditional inks were based on toxic solvents, expensive solvents, and what we did here in Manchester was to basically work with water. So the solvent here, this ink, is based on water. Manchester is the home of graphene. There's a lot of investment gone in from the UK government and the university to support this kind of research, and we've got world-class, state-of-the-art facilities in the building behind me. But it's much more than that. You need colleagues who really know what they're doing and who are real top-drawer scientists, and we've got that magic blend of both here at Manchester. जी तो जीजो, आपने देखा कि ले देकर बार बार सारी बात ग्राफीन पर ही आकर खत्म होती है, और इसका मेन रीजन इंसान को हमेशा के लिए इंटरनेट के साथ जोड़ना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं बार बार। और ग्राफीन वाली जो हमारी सीरीज है, इसमें मैंने आपको बार बार बताया है कि जैसे मैट्रिक्स वाली माइंड प्रोग्रामिंग है, जैसे कि जी एक कंप्यूटर सिमुलेशन है या एक गेम है जिसके अंदर हम जी रहे हैं, वही सेम चीज करने लगे। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी बिग डिस्ट्रैक्शन है। जैसे न्यूज के अंदर डिस्ट्रैक्ट किया जाता है लोगों को कि मेन जो भी एजेंडा पीछे चल रहा होता है उसको छुपा दिया जाता है और फजूल किस्म की न्यूज सामने लाई जाती है कि दाना नीर जो है मशहूर होगी, उसने एक क्लिप बोला और रातों रात वो फेमस हो गई है, जी ये हो गया वो हो गया। इस तरह की फजूल चीजें हमारे सामने लाकर हमें डिस्ट्रैक्ट किया जाता है मेन रीजन से या मेन एजेंडा से, जो कि उस वक्त काम चल रहा होता है पीछे। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग जो है वो हकीकी दुनिया में होने की वजह से जो भी उनके साथ ज्यादतियां होंगी उसकी तरफ से उनका ध्यान हट जाए और वो डिजिटल वर्ल्ड में अपने आप को सेटिस्फाई करें और वो सोचें कि हम इतने खुश हैं, हम डिजिटल वर्ल्ड में ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम उड़ सकते हैं, हम आसमान से देख सकते हैं, हम सबको देख सकते हैं। हम अपने आप को जो है वो एक सुपर हीरो आप कह सकते हैं या खुदा जो है वो बनता हुआ देखना चाहते हैं लोग, और वो चीज जो है उनकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, जो कि नकली दुनिया है। इंसान असली दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता डिस्कनेक्ट होता जाएगा और रियल वर्ल्ड के अंदर उसके ऊपर जो भी ज्यादतियां हो रही हैं, जैसे भी महंगाई हो रही है, उससे उसको कुछ लेना देना ही नहीं होगा, क्योंकि उसका सारा दिल करेगा कि नौकरी से फौरन से जान छूटे और मैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एंटर हो जाऊं। अभी फिलहाल तो मेटावर्स और ओमनीवर्सेस वगैरह चीजें बनाई जा रही हैं, लेकिन आगे फ्यूचर में इन्होंने करना यह है कि इंसान को टोटली हमेशा के लिए इंटरनेट के साथ 5G के साथ कनेक्ट कर देना है, ताकि इंसान कभी भी रियल वर्ल्ड में आ ही ना सके, वो हमेशा फिजिकल वर्ल्ड के बजाय नकली दुनिया के अंदर रहे।